Welcome to our channel. PTC Creo is a comprehensive 3D software, and I will be learning it step by step. Subscribe to my channel and stay updated. In this video we will learn how to fix tie rod in structure to reduce vibrations during load. Now we will learn how to edit part in the assembly. It is very easy make any mechanism or machinery, it's perfect for the designing. एक साहब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने कहा आयशा से। भरी महफिल में कहा, हरम में इजहार मोहब्बत औरत के साथ ऐब था, लेकिन आपने भरी महफिल में कहा आयशा से। वो घबरा गए, उनको तवक्को नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा मतलब है मर्दों में किससे ज्यादा प्यार है? तो आप समझ गए कि उसका मेरा जवाब हजम नहीं हुआ। तो आपने ये नहीं कहा अबू बकर से, आपने कहा आयशा के अब्बा से सबसे ज्यादा। एक साहब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने कहा आयशा से। भरी महफिल में कहा, हरम में इजहार मोहब्बत औरत के साथ ऐब था, लेकिन आपने भरी महफिल में कहा आयशा से। वो घबरा गए, उनको तवक्को नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा मतलब है मर्दों में किससे ज्यादा प्यार है? तो आप समझ गए कि उसका मेरा जवाब हजम नहीं हुआ। तो आपने ये नहीं कहा अबू बकर से, आपने कहा आयशा के अब्बा से सबसे ज्यादा।
तो मेरे नबी ने फरमाया, पहली बात किसी को धोखा ना देना। तिजारत में फ्रॉड ही फ्रॉड और दयानत ही दयानत है, दोनों चीजें हैं। जिम्मेदारी में फ्रॉड हो ही नहीं सकता। तो आपने फरमाया हिफ्ज़ अमानतिन, कभी किसी को धोखा ना देना। कि नमाज छोड़ने पर आपने कहा उसने कुफर किया जिसने नमाज छोड़ी, लेकिन धोखा देने पर आपने कहा जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया, उसको उम्मत से निकाल। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। तो मेरे नबी ने फरमाया, पहली बात किसी को धोखा ना देना। तिजारत में फ्रॉड ही फ्रॉड और दयानत ही दयानत है, दोनों चीजें हैं। जिम्मेदारी में फ्रॉड हो ही नहीं सकता। तो आपने फरमाया हिफ्ज़ अमानतिन, कभी किसी को धोखा ना देना। कि नमाज छोड़ने पर आपने कहा उसने कुफर किया जिसने नमाज छोड़ी, लेकिन धोखा देने पर आपने कहा जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया, उसको उम्मत से निकाल। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। I believe that we have made significant progress. Initially, I thought that if my audience could see the work, it might be useful to society. This software is complete, and it will be understood. First, we need to establish the basics for someone. To understand it, I need to ensure that my audience knows that this software is primarily for them.